students, now in this lecture we are going to discuss general features of very first class of superclass Tetrapoda, and name of the class is Amphibia. There are four classes of superclass Tetrapoda. They are Amphibia, Reptila, Apes and Mammalia, and we have to discuss features of all these four classes. Now you can have some idea about the superclass Tetrapoda. Tetra means four and poda means feet. Means the members of the Tetrapoda class, superclass, they all have four limbs in their body. So this is the very first class Amphibia that we are going to discuss, and here in this body outline you can see that I have shown four limbs. एम्फीबिया क्लास का एक ही मेंबर दिखाया गया है, उसकी बॉडी आउटलाइन है, और इस बॉडी आउटलाइन से आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा कि ये मेंबर कौन है. यू हैव सीन इट इन योर सराउंडिंग्स. इट इज द बॉडी आउटलाइन ऑफ फ्रॉग. तो यहाँ पर आप इसमें फोर लिम्स देख सकते हैं. दिस इज द वेरी फर्स्ट लिम्ब एंड एक इसके बैक में है जो दिखाई नहीं दे रही. ऐसे ये दो लिम्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. तो ये फ्रंट लिम्स हैं जो इसके एंटीरियर साइड पर है, इनको हम फोर लिम्स कहते हैं, और जो इसके बैक पोजीशन पर है ये वाले, तो इन लिम्स को हम हिंड लिम्ब के नाम से जानते हैं. मींस देयर आर टू फोर लिम्स एंड टू हिंड लिम्स. टोटल फोर लिम्स हैं जिनमें से दो एंटीरियर साइड पर हैं और दो पोस्टीरियर साइड पर हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर हैबिटेट, ये कहाँ पर है, तो इनके क्लास के मेंबर्स को, एम्फीबिया को हम एम्फीबियंस बोलते हैं. एंड एम्फी मीन्स ड्यूअल. दे रिक्वायर बोथ वाटर एंड लैंड फॉर देयर लाइफ साइकिल. फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल they will require presence of water also and land. Actually they are, most of them are land animals. ये terrestrial forms हैं, लेकिन terrestrial habitat में भी ये उन एरियाज में रहते हैं जो मॉइस्ट रहते हैं या which are having a large amount of water, or they are actually living nearby the water. So moist area में रहने का रीजन ये है कि इनकी लाइफ साइकिल में एक ऐसी फेज आती है, मीन्स जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, then the male and female gamete will fuse only inside the water. So रिप्रोडक्शन करने के लिए टोटली वाटर पर डिपेंड करते हैं. एंड देयर एग्स आर आल्सो शेललेस. तो अगर ये इनकी जो एग लेइंग है, दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर, दे आर लैंड एनिमल्स, बट इफ दे आर गोइंग टू ले देयर एग ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, दे विल अंडरगो डेसिकेशन बिकॉज दे आर शेललेस. तो इसीलिए उनको एग लेइंग के लिए, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन के लिए टोटली वाटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. इसलिए इनकी लाइफ साइकिल में वाटर और लैंड दोनों टाइप के हैबिटेट्स की जरूरत पड़ती है. दे रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस. नाउ सी देयर बॉडी स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप देख सकते हैं द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू रीजन्स. आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई नेक नहीं दिखाई दे रही. ये वाला एरिया इसका हेड रीजन कहलाता है, और बाकी का जो इसका पोर्शन है, दिस इज नोन एज ट्रंक. सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पोर्शंस, हेड एंड ट्रंक रीजन. टेल इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द एडल्ट मेंबर्स, लेकिन ज्यादातर मेंबर्स जब अडल्ट फेज में आते हैं, जैसे ये अडल्ट फ्रॉग दिखाया गया है, they don't have any tail like structure. It was present in their larval stage, but it is highly reduced in this adult stage. But there are members like salamander which can have tail. और इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि they, most of the members they don't have in adult stage the neck or the tail. So neck नहीं है तो यहाँ पर आप इसके हेड को ज्वाइन करके दे सकते हो. इसके पूरे बाकी का जो एरिया है, इसमें आपको कोई ऐसा ये अपने हेड को रोटेट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज लैकिंग एनी नेक लाइक स्ट्रक्चर एंड दे डोंट हैव एनी टेल इन एडल्ट स्टेज. सो बॉडी इज हैविंग द टू मेजर पोर्शंस, हेड एंड ट्रंक. नाउ दिस बॉडी इज हैविंग ए वेरी थिन स्किन. इनकी जो स्किन को अगर आप टच करेंगे तो बहुत थिन होती है, एंड
and it is having the mucus gland. Mucus glands will release mucus that keep its skin moist. So स्किन बहुत पतली है, थिन है और मॉइस्ट रहती है. द रीजन फॉर दिस इज दैट दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन ऑल्सो. अगर आप इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैन बी गिल्स, इट कैन बी लंग्स एंड स्किन. गिल्स इनकी लार्वल स्टेज में रिपोर्ट की गई है. कुछ एक मेंबर्स ऐसे भी हैं जो अडल्ट स्टेज में भी इनके पास गिल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही मोस्ट जो इनके मेजॉरिटी मेंबर्स हैं, जैसे ही वो अडल्ट स्टेज में एंट्री करते हैं, दे लूज देयर गिल्स बिकॉज दे वर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ देयर लार्वल स्टेज ओनली. इन अडल्ट स्टेज दे हैव लंग्स. जैसे ये फ्रॉग है, इस वक्त इसके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, लेकिन जब ये लार्वल स्टेज में था तब टेडपोल स्टेज या इसके लार्वल स्टेज में गिल्स थे. इसीलिए हम कह सकते हैं the amphibians they have gills or they can have lungs. and जैसे यहाँ पर अगर ये अडल्ट स्टेज में है तो इस वक्त इसके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, लेकिन it also breathe or respire with the help of its thin moist skin. ओके, सो इसमें जो आप रेस्पिरेशन के टाइप्स बता सकते हैं. गिल्स से अगर रेस्पायर करते हैं तो आप इसको कहेंगे ब्रेकियल रेस्पिरेशन. अगर ये लंग से रेस्पायर करते हैं जैसे ये अडल्ट फ्रॉग, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे. और इसके साथ साथ क्योंकि ये स्किन से भी रेस्पायर करते हैं तो सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. सो वो दे हैव ब्रेकियल, दे हैव पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन देयर लाइफ साइकिल. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर इसकी आईज आपको दिखाई दे रही हैं. ये इसकी एक आई है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर दूसरे साइड इसकी दूसरी आई रहेगी. एंड दिस आईज हैव मूवेबल आईलिड्स. इनके पास ऐसी कवर्स होते हैं आई के जो जिनको ये मूव कर सकते हैं. एंड दे हैव इवन जैसे ये फ्रॉग है, इसके पास एक ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलिड भी होती है. अगर इफ दिस फ्रॉग हैज टू मूव इनसाइड द वाटर फॉर कैप्चरिंग द फूड because it is a carnivorous animal, तो अगर ये अपने फूड के लिए एक्वेटिक मीडियम में एंट्री करता है, वाटर में एंट्री करता है, then it require the nictitating membrane or the transparent eyelid that will cover its eye. But because they are transparent, the third eyelid is transparent in nature, it can also see through it. तो यहाँ पर मूवेबल आईलिड्स हैं जो इनकी आईज में कोई भी बाहर से डस्ट पार्टिकल है उनसे प्रोटेक्शन करती है. एंड दे ऑल्सो हैव टीयर ग्लैंड्स इन देयर आईज जो इनके आईज को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. यहाँ पर आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, दो ओपनिंग्स होती हैं यहाँ पर, नेरिस जिसको आप बोलते हैं. एंड बिल्कुल यहाँ इस एरिया पर एक आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा. दिस इज रिप्रेजेंटिंग इट्स ईयर. टिम्पैनम, इसके ईयर को हम जो आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है डार्क सा, इसको आप कहते हैं टिम्पैनम. दोनों तरफ मिलेगा आपको. और टिम्पैनम इज रिप्रेजेंटिंग द ओपनिंग ऑफ इट्स मिडल ईयर. एक्चुअली दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर, कोई बाहर से कवर करने वाला कोई पिना जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. दिस इज जस्ट द मेम्ब्रेनस कवर्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग इट्स मिडल ईयर. सो दिस area is known as the tympanum, the membranous middle ear. Okay, next thing is they have three chambered heart. There are two auricles in their heart and one ventricle, so they have three chambered heart. आपने फिशेस पढ़ी हैं, बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस. उन दोनों क्लासेस के मेंबर में टू चैम्बर्ड हार्ट था, लेकिन यहाँ पर ये इनका एक एडवांस्ड फीचर आप कह सकते हो. दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. बट बिकॉज देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड. दे आर poikilothermous animals, means they can't maintain their buoyancy, temperature. वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, कोल्ड ब्लडेड होते हैं. इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि
विंटर सीजन है या बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन या समर सीजन में आपको फ्रॉग्स या टोड्स इस तरह के एम्फीबियंस नजर नहीं आते हैं, बिकॉज दे अंडरगो फॉर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन पीरियड। हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप, बिकॉज दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, सो दे कांट टॉलरेट द extremely low temperature conditions or extremely high temperature conditions. So they have to undergo the winter sleep, that is hibernation, or the summer sleep, that is estivation. Okay. Now their fertilization process, as we all know that these are dependent for their reproduction process on water. क्योंकि aquatic medium में जो fertilization process है, male and female gamete are going to fuse inside the water, so आप कह सकते हैं the fertilization is external, and they are oviparous type of organisms. They will lay eggs, and eggs are shell-less. They are not covered by any thick cover. So in dry conditions, if they are outside the water, if they are placed outside the water, they can undergo desiccation. So they are completely dependent for this reproduction phase on the water, and their development is external, means they are going to lay eggs inside the water. Male and female gamete will fuse inside the water, and then egg will develop in which the zygote will be there. So development is also external. Here in case external fertilization and external development, and they have indirect development. आप सभी ने लोअर क्लासेस में फ्रॉग की लाइफ साइकिल को पढ़ा होगा। जैसे ये अडल्ट फ्रॉग है, दिस फ्रॉग विल रिलीज द मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो फ्यूज करते हैं, तो उसके बाद एग फॉर्मेशन होती है। दिस एग्स विल नॉट डायरेक्टली फॉर्म दिस अडल्ट बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू फॉर्म ए लार्वल स्टेज। टेडपोल स्टेज आती है, जिसको आप इसकी लार्वल स्टेज कहते हैं, और टेडपोल में धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस के बाद, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये एडल्ट फॉर्म एक्वायर होती है। सो एग्स which are present inside the water, they will develop first of all into a fish like structure. Why I am saying fish like? Because it is having the tail, it is having the gills like fishes. तो ये फिश जैसा जो एक स्टेज है इनकी, जिसको आप टेडपोल कहते हो, इसके बाद धीरे धीरे इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, and this metamorphosis in this tadpole of the larval stage will lead to formation of this adult body. That's why the development of these organisms is indirect type of development. They are unisexual organisms, and there are some features in these organisms which can make us to differentiate them from from each other. Means male and female can be identified because of a few features. जैसे अगर ये मेल फ्रॉग है तो यहाँ पर इसका एक नप्शियल पैड होता है, इसके जो डिजिट्स हैं यहाँ पर, ये इसके डिजिट्स दिखाई गई हैं, तो डिजिट्स के पास एक स्वोलन पोर्शन होता है जिसको आप नप्शियल पैड कहते हैं, एंड दिस नप्शियल पैड हेल्प इट टू मेक ए ग्रिप ओवर द फीमेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, एंड these male frogs also have vocal sacs because of which they can produce a sound specific to these males during the breeding season. Okay, तो क्रॉकिंग में हेल्प करने वाली जो वोकल सैक्स होते हैं वो मेल्स के फीचर्स होते हैं। कुछ फीचर्स हैं जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। Now let's discuss about their examples. You can give example of buffo, which is known as toad, rana, ये scientific name है rhina tigerina, rana, which is commonly known as frog, hyla, the tree frog. वैसे तो ये aquatic और terrestrial forms हैं, लेकिन terrestrial में भी कुछ ऐसे हैं जो arboreal है, means tree या सरफेसेस पे रहने वाले, जैसे ये हाइला है जिसको आप
आप ट्री फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं। ऐसे सैलेमेंडर, जैसे कहा कि एडल्ट फॉर्म में टेल नहीं दिखाई देती, लेकिन सैलेमेंड्रा जो है इसमें टेल एडल्ट फॉर्म में भी आपको दिखाई देगी। सो सैलेमेंड्रा इज द साइंटिफिक नेम एंड कॉमनली इट इज नोन एज सैलेमेंडर। एंड इक्थायोफिस, दिस इक्थायोफिस इज a special member of this class Amphibia which is not having limbs, limbless Amphibia। टेट्रापोडा क्लास है, इनमें आपको सभी में लिम्स दिखाई देंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे ये इक्थायोफिस which is a limbless amphibian। So these were the general features of this class Amphibia। One more thing we can add here, these animals have a special chamber which is known as cloaca। तो क्लोएका एक ऐसा चैम्बर है जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तीन अलग अलग सिस्टम होते हैं बॉडी के। एक्सक्रीटरी सिस्टम से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, मींस द यूरिनरी सिस्टम। Reproductive system is meant for production of eggs or release of eggs and the male gametes, and the digestive system, it is meant for digestion of food। लेकिन तीनों ही systems की जो opening है, means excretory system, digestive system and reproductive system, they are commonly opening in a chamber which is known as cloaca। Cloaca is present in these animals। Okay, so these were the features unique to these animals, amphibians or the class Amphibia, and I hope these features are clear to you।